डियर स्टूडेंट्स, आज ISS 2023 का पेपर सॉल्व करें, पेपर नंबर 3। सो ये पहला है, डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स विथ स्ट्रक्चरल इक्वेशन, डिस्कस द आइडेंटिफायबिलिटी। So we need to check if the parameters are structural in the structural equations can be uniquely determined. So necessary condition for identifiability is that the number of excluded exogenous variables, लिख के रखिए, number of excluded exogenous variables from each equation must be greater than or equal to number of included endogenous variables. -1, यही फॉर्मेशन है। सो पहला है y1 इक्वल टू बीटा 1 3 y3 1 1 x1 1 3 x3 प्लस एप्सिलॉन 1। सो इन दिस इक्वेशन देयर आर टू एंडोजेनस वेरिएबल्स दिए हुए हैं, टू एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं हमारे पास भाई y1 और y3, ठीक है, एंड टू एक्सोजेनसली गिवन x1 एंड x3। सो द टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर हो गया, नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एक्सोजेनस वेरिएबल्स आर 0 because since all the exogenous variables are included, so the numbers included in the number of included exogenous variables -1, it is 2 minus 1 equal to 1. So since the number of excluded endogenous or excluded endogenous variable is 0 and this is not greater than or equal to 1, so we can say that not identified. दूसरे में चलेंगे y1 y21 y23 x3 epsilon 2। यहाँ पर में दिस इज वन इक्वेशन हैज y1 एंड वन एंडोजेनस, एंडो यहाँ पर सिर्फ 1 है, एंडो इज 1 एंड एक्सोजेनस इज x1 x3 दैट इज 2। So यहाँ पर में the number of excluded endogenous variable is 0 and the numbers included is 1 minus 1 is 0. So the number excluded exogenous variable 0 is equal to the included endogenous variable, hence identified. y2 beta 3 3, so in this case दो variable endogenous है, y2 y3, exogenously है x1 x2, ठीक है। सो एक्सक्लूडेड एंडोजेनस है 1 और यहाँ पर 2 minus 1 1, यहाँ भी सेम है, सो ये भी आइडेंटिफाइड है। सो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इक्वेशन 1 नॉट आइडेंटिफाइड, सेकेंड एंड थर्ड आर आइडेंटिफाइड।